Hello and praise the Lord. I want to welcome you on this page of Assembly of Believers Church, Katra, Prayagraj. And this page is Sheroes of Faith. And I think this is the last episode of this topic which we were taking, Sheroes of Faith. And I am honored and I feel happy and glad to invite on our page Dr. Pratna Sanyalal and Zion Zadid, who will be helping us, who will be leading us into praise and worship. So I hope you all are joining, and as you are joining, you can also share so that all others can also join with us. So I'll request Zion and Pratna to lead us into praise and worship. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is faithful and our God is able, and He is always the same. He is the unchanging God that we have in our life, and it's a blessing as well as a privilege to know Him. Amen? Amen. Let's all worship Him. Praise the Lord. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all power. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucit हुआ, कब्र में गया, जाने ने तू जिया, दिन दिन प्यारा हुआ, एक फूल समान कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके अद्भुत है प्यार। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जाने ने तू जिया, नींद जागा हुआ, एक फूल समान कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके अद्भुत है प्यार। मुझे करके अद्भुत है प्यार। Thank you, Jesus. I want to thank Pratna and Zion and invite our Bishop Arun Michael to lead us into this session. Hey, praise the Lord, everyone. Thank you for joining in. I will request one more time if you can just go ahead and share with others so that others can join in. दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको ज्वाइन कर सकें. अनु can you pass me my Bible and my notes? और आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के चल रहे हैं. Beautiful topic that I'm trying to take this evening, and that is ministering unto Him. What a privilege it is to minister unto Him. परमेश्वर की सेवा कर पाना कितने बड़े प्रिविलेज की बात है.
एक बहुत बड़े privilege की बात है. It's a big blessing that we can worship God, we can serve God. Now, you know, serving God does not mean that he is sick and he needs somebody to give him a massage. Serving him does not mean that he needs anything from our hands and only we can give to him. ऐसा कुछ नहीं है. Serving God does not mean that he lacks something and we have to provide that. You need to understand that Acts chapter 17, Paul was talking to the church in Athens, or there was no church, it was a group of Gentiles, those who did not believe in the Lord, they had never heard of the Lord. He was talking to them and he said, God does not take the service of our hands as if he needed it. उससे हमारे हाथों की सेवा की ऐसी जरूरत नहीं जैसे उससे बड़ी आवश्यकता हो, क्योंकि लिखा है वो तो सब कुछ सबको देता है. That he himself giveth life and everything that people need. So I cannot supply something that God doesn't have. There is no lack that the kingdom of God has. No, the king is king, like he's sovereign king. हजारों पहाड़ों के जानवर सारे उसके हैं. He would not need me to give him a sacrifice. He would not need me to utter a word of praise and then he would say, wow, I feel complete now because you're praising me. No, my praising God is a due response to his greatness. My praising God is a right response to his greatness. So I would request you, join with us this evening. इस संध्या हमारे साथ ज्वाइन करें और आज हम एक आशीषमय चीज को लेके चलेंगे. What a privilege it is to minister to Jesus. And there were some women who were doing it. और आज उन स्त्रियों के बारे में बात करेंगे. अनु, may I request you to read from Luke chapter 8 and verses 1, 2 and 3. Luke chapter 8 verses 1, 2 and 3. And I'll request you to go ahead and share with others so that others can join in and many others can be part of this service. Who knows, somebody gets touched. किसको मालूम है कि परमेश्वर किसी को आशीष दे दे और बरकत दे दे. Let me just go ahead and I have I'm sorry, I did not even let my church group know that we are live right now. So can you just go ahead and by the time. Luke chapter 8 verse 1, 2 and 3. Now it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. Wow. Now Jesus is going from one city to another, one village to another, and all the 12 are with him. And he's preaching the gospel of the kingdom of God. He's preaching that God is in charge over everything. Now, why gospel of this kingdom? Because 435 years, people were waiting for Messiah to come and rule and reign. So Israel knew very well that they needed a savior, they needed Messiah, they needed king to come and rule. And that's why Jesus came pronouncing and declaring the kingdom of God, because people wanted a benevolent king. People wanted a good king. लोगों को एक अच्छे राजा की आवश्यकता थी. 435 साल तक इनके पास कोई भविष्यद्वक्ता नहीं आया था और ये इंतजार कर रहे थे एक मसीहा आएगा, एक राजा आएगा. And that is why when Jesus came, he came as a king and he started declaring that God is taking over everything now. उसने सब कुछ जो इस्राएलियों के हाथ में सौंपा था, now he is taking it over and he will give to Gentiles जो उस पर विश्वास करेगा और बहुत से लोग. So he started preaching the gospel that God is king, that God is in charge, that God is sovereign ruler, and he started preaching that. जहां गया उसने preach करना शुरू किया. Now अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कुछ शक हो रहा है कि what does it mean to preach the kingdom of God, in the same chapter, Luke chapter 8, उसको देखिए क्या कह रहा है. Luke chapter 8, what does it mean to preach the kingdom of God? Luke chapter 8 and verse 12. Now he was talking about after preaching about the kingdom, he said, बहुत से लोगों को ये राज के भेदों की समझ नहीं दी गई. Many people have not been given the mystery of the kingdom. And then he started preaching about a parable of a sower who went out to sow the seed. And then verse 12, read verse 12, what does it say? Those by the wayside are the ones who hear. Then the devil comes and takes away the word from out of their hearts, lest they should believe and be saved. It means the message was so that you believe and be saved.
The message of salvation was the message of the kingdom of God, so that you believe and be saved. The devil was trying people not to believe. Now Jesus, along with 12 his disciples, they went from city to city and village to village. आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा था मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की जगह नहीं है. इसका मतलब क्या? I'm traveling from here and there. अच्छा, लोग जो 12 लोग हैं उसके चेले हैं, वाओ, दे आर देयर लर्निंग विद जीसस क्राइस्ट कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे मिनिस्ट्री होती है, कैसे प्रीचिंग होती है, हीलिंग द सिक क्या है, कास्टिंग ऑफ द डीमन क्या है, ये सब कुछ सीख रहे थे. बट इनके अलावा एक भीड़ थी आज जिसका चर्चा करना मांगता हूं. एंड दीज आर सम पावरफुल टूल्स, पावरफुल वेपन्स एंड पावरफुल पीपल इन द किंगडम ऑफ गॉड. परमेश्वर के राज में कुछ लोग आए थे. सुनिए आगे क्या लिखा है, 8th chapter and verses 1, 2 and 3 again. Now it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him. The 12 disciples, 12 apostles were with him. They were not the only ones. Fear, yes. And certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons. Bible says there were certain women also. They were also traveling with Jesus. Now think about this. Now 12 men, they can travel like from one city to another city, village to village. अरे कितना पेनफुल जर्नी होगी. एक गांव से दूसरे गांव में जाना, एक शहर से दूसरे शहर में जाना. आज तो रोडें बनी हुई हैं, उस जमाने में पूछिए जब रोडें नहीं बनी हुई थी. Painful journey, and these certain women are taking this painful journey along with Jesus Christ. I call them again sheroes of faith. They trusted Jesus so much so that they talk to their husbands, they talk to their family members and say, this man has liberated us, this man has set us free, this man is a savior, this man is a healer, this man is the ruler and the king, and let us serve him. हमें उसके पास जाने दो, उसकी सेवा करने दो. तो लोगों ने उनसे कहा होगा, अरे ये बंजारों की तरह इधर उधर घूमता रहेगा, तुम्हें मालूम है. इसके बावजूद, and they said yes, in spite of that we want to go along with this man. I pray that there will be in church, in every church there will be some women who would dedicate themselves to be the preacher of the gospel of the Lord Jesus Christ. कुछ ऐसी स्त्रियां होंगी जो यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगी और जहां जहां यीशु मसीह लेके जाएगा वहां जाएंगी और अपनी गवाही को यीशु मसीह के साथ शेयर करेंगी. I pray that you are one of those women if you are a woman. I pray that you will be one of those men if you are a man listening to me. That those who will walk with Jesus, they will learn with Jesus, and they will see how Jesus is expanding the kingdom of God. Now this is not the end. Certain women, right? अभी खत्म नहीं हुआ. Certain women के अलावा और उसमें से एक नाम दिया गया है कौन? Mary. Mary Magdalene. She was from Magdala. There was a place called Magdala, and she was delivered from 7 demons. 7 दुष्ट आत्माएं. आपको मालूम यीशु मसीह ने एक स्टोरी सुनाई थी कि जब दुष्ट आत्मा किसी में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, नहीं पाती तो कहती मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी और अपने से बुरी 7 और आत्माओं को लाती है. उसकी दशा बिगड़ जाती है. 7 demons, you know what it means? 7 demons living in somebody means destruction of that body, destruction of that soul, destruction of the whole psyche, the destruction of that woman. इस औरत को तबाह कर दिया था दुष्ट आत्माओं ने. But praise God, आज ये स्त्री यीशु के साथ साथ है क्योंकि यीशु मसीह ने इसको दुष्ट आत्माओं से आजाद किया है. And I'm praying right now, अगर कोई जन ऐसा है जिसको ऐसा लगता है मेरे घर में भी evil spirit काम कर रही है, एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कहता हूं, there is power in the name of Jesus, and I command every demonic strongholds to be broken, because every demon has to go in the name of Jesus. Jesus has all authority in heaven and on the earth, and every demon has to bow before him, and that's why the demon bowed before him and they left this woman, and this woman is free. कितनी आजाद होकर के यीशु मसीह के साथ साथ गांव जा रही है. लोग कह रहे हैं पागल है, दीवानी है, कहां तू यीशु मसीह के पास जा रही है, उसके पीछे फिर रही है. और ये औरत कह रही होगी, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं क्या थी और मेरे उद्धारकर्ता ने मुझे क्या बना दिया और आज मैं उसके पीछे चल रही हूं. Now there are certain women who decided to follow Jesus, but that is not all. Listen what happens next, and we read next. And Joanna, the wife of Uzzah, Herod's steward, and Susanna, and many other who provided for him from their substance. And many other women.
I pray that you understand this, that there were certain women and now many other women. Joanna, Susanna, and many other women provided for his sustenance. चेलों की भूख मिटाने के लिए अपने पैसे दे रही हैं. ये कौन कौन थी? इनमें से एक प्रोमिनेंट लेडी भी पाई जा रही है जो हेरोद के घर के एक ऑफिसर की पत्नी है. इसके घर में शायद आश्चर्य कर्म हुआ होगा क्योंकि इसकी लाइफ में या तो हीलिंग हुई है या डिलीवरेंस हुआ है. एंड दैट इज व्हाई शी इज विद जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों से पूछिए स्टोरी, आपको पता चलेगा. ईदर देयर इज अ स्टोरी ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम सिन और ईदर स्टोरी ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम सिकनेस और डिलीवरेंस फ्रॉम डीमंस. एंड आई प्रे आज जब आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मे यू बी डिलीवर्ड फ्रॉम एवरी डिमोनिक स्ट्रॉन्गहोल्ड, मे यू बी डिलीवर्ड फ्रॉम एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड मे यू बी डिलीवर्ड फ्रॉम एवरी पावर ऑफ सिन एंड डीमंस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप आजाद होने पाए. और यहां लिखा हुआ है there were many women who were helping him with their money, sustenance. मैं सोचता हूं अनु कि ऐसे लोगों की आवश्यकता सारी कलीसिया में पाई जाती है. And if you are one who has been delivered by Jesus Christ and you are part of a ministry, I pray that you will become a blessing for that ministry. इन स्त्रियों ने सोच के रखा, ठान के रखा कि ये यीशु मसीह की सेवा करेंगी. इन्होंने सोच के रखा, ठान के रखा कि यीशु मसीह के चेलों की सेवा करेंगे. और कैसे, क्या क्या सेवा करती होंगी? याद है तुम्हें यीशु मसीह के चेले जा रहे थे, रास्ते में बालें तोड़ तोड़ के खाने लगे क्योंकि उन्हें क्या लगी थी? भूख. यूहन्ना 4 में आपने पढ़ा होगा कि यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह ने कहा जाओ नगर में चले जाओ और कुछ खाना मोल ले आओ. इसका मतलब इतनी यात्रा में थकान ज्यादा होती थी, यात्रा में भूख ज्यादा लगती थी और इनके लिए कोई नहीं था जो इनकी चिंता करे. नई नई जगह जा रहे हैं, कई बार सर रखने की जगह नहीं है. ये स्त्रियां कह रही हैं डोंट वरी, माय हस्बैंड इज वर्किंग एंड माय हस्बैंड हैज गिवन मी मनी, और मुझसे कहा है यीशु मसीह के काम के लिए जितना लगे लगा देना. क्या आपको मालूम है ऐसे लोगों की आज भी बहुत आवश्यकता है कलीसियाओं में. सेवा का काम इसलिए नहीं फैल पाता क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया में कई बार ऐसी स्त्रियों की कमी होती है जिनके पास गिफ्ट ऑफ गिविंग है, जो बहुतों के लिए सुसमाचार के दरवाजे खुलवा देती हैं. I praise God that Jesus has some women. यीशु मसीह के पास कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो कह रही हैं हम छुड़ाए गए हैं. Not out of greed we are going to serve you, but out of gratitude we are going to serve you. कुछ लोग अपना पैसा इसलिए देते हैं ताकि उन्हें 30 गुना मिल सके, 60 गुना मिल सके, 100 गुना मिल सके. आपको एक चीज बताना मानता हूं, पैसे के लिए बाइबल 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना नहीं बताती. बाइबल परमेश्वर के वचन के फलवंत होने के लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बताती. हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 6 पद में जो जैसा बोता है वैसा काटता है, जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटता है, पर जो ज्यादा बोता है ज्यादा काटता है. इसका मतलब क्या है? अगर आप खूब परमेश्वर के राज में बोएंगे तो खूब काटेंगे. वहां 30, 60 और 100 गुने का कोई मतलब नहीं है. और कई बार ये एक लालच हो जाता है हमारे अंदर और हमसे कहा जाता है तुम 2000 दो, तुम्हें 30 गुना सोचिए 60,000 मिल जाएगा. अरे मेरा परमेश्वर अगर आपको 200 गुना देना चाहे तो आप बोलेंगे ऐसा नहीं होता है. क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं होता है. आप गेहूं के खेत में जाइए, एक बीज बोया जाता है जो उससे बाल निकलती है. कई बार मैंने गिना है खुद, उसमें 140 से 150 दाने तक होते हैं. एक दाना बोया गया तो 150 दाने सिर्फ एक ही उस बाल में पाए जा रहे हैं, एक ही उस डाल में पाए जा रहे हैं, एक ही उस पौधे में पाए जा रहे हैं. जी हाँ, परमेश्वर लिमिटेड थोड़ी कि 100% ही दे आपको. आप सोच के देखिए, अगर परमेश्वर आपको सिर्फ 100 गुना दे तो क्या होगा ना? परमेश्वर जरूरत के मुताबिक इतना देगा जो आपने सोचा नहीं है. और इन स्त्रियों को ये बात समझ में आ गई थी that we don't have to serve God out of greed, we have to serve God out of gratitude for God. Hallelujah. और मेरी दुआ है कि आप ग्रैटिट्यूड की वजह से उसकी सेवा करने पाए. हम इन स्त्रियों के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे. पर अनु तुम कुछ कह रही थी. You had some powerful points about as I was reading this passage, I was like meditating on it, and I came to know this, that they are not paying it back because they are delivered from the demons or they are being healed. They are not paying it back. We cannot pay back Jesus to God.
they are doing is, as Bishop said, they are doing it out of love and gratitude. Amen. Whatever you do, you cannot pay back to God. Amen. You have to do it with love and gratitude. Amen. Amen. इससे पहले कि अनु इसको इस there is few examples that she has. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात. सपोज मेरी डॉटर मेरे पास आए और आ करके मुझसे कहे, शालोम मेरे पास आए और आके कहे, डैडू आपने मेरे खाने पर आज तक कितना खर्च किया है. मैं बोलूँ ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटा? नहीं बताइए, आज मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं IBM में काम कर रही हूँ, मुझे बताइए आपने मेरे खाने के ऊपर अब तक कितना खर्च किया है. बार बार पूछती रहे. मैं कहूँ नहीं मैं नहीं बता सकता. उसने नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा. मैंने कहा यही कोई बेटा अब तक पूरे जीवन काल तक में मैंने तुम्हारे ऊपर कम से कम यही कोई 10 लाख रुपए खाने पे खर्च किया होगा. तो मुझसे बोले अब मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, ये लीजिए 10 लाख रुपए का चेक रहा, आई हैव पेड बैक. कैसा लगेगा? मुझे कैसा लगेगा? परमेश्वर पिता को कभी नहीं चाहिए. परमेश्वर पिता को ग्रैटिट्यूड एंड लव चाहिए. परमेश्वर पिता वो नहीं है कि हम उससे कहें कि तुमने ये दिया था, हम बदले में ये दे रहे हैं, ये लीजिए, हो गया ना, चुकता हो गया ना. ना ना ना, आप कभी चुकता नहीं कर सकते हैं. इसीलिए उर्दू का एक वर्ड है शुक्र करना. शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं. शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम शुक्र कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई यू नेवर गो टू गॉड एंड से ओके आपने मेरे इतना काम किया है, लेट मी डू दिस फॉर यू. No, do it out of gratitude, do it out of love for God. परमेश्वर के प्रेम के प्रति उसकी सेवा करें. Anu, you were talking about some women. Yeah, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा करी. Yes. I was reading about few ladies and how they showed the nature of our Father in heaven. And I was reading about Tabitha, known as Dorcas, also in Acts 9:36 to 42. You will it's recorded in the Bible, her testimony. And about this woman, it's written like this: this woman was full of good works and charitable deeds which she did. Amen. And she was a businesswoman. She was doing she used to make tunics and garments, and the charity she was doing, the good things she was doing, वो बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया करती थी. उसके बारे में ये रिकॉर्ड है कि ये बहुत देने में, दान देने में बहुत अच्छी महिला थी. और किसी तरह से इसकी डेथ हो गई. And if you read this chapter, Acts 9:36 to 42, you will see that how many people are crying for this woman. इस औरत के लिए कितने लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं. क्यों विलाप कर रहे हैं? Because she has invested something in their lives. She has given something for the ministry, for charity, and that is why so many people are grieving. They are, and that's why they went to Peter and they called Peter, "Ki please come and help us, and maybe this lady will be healed and come back to life again." And this is how this lady was being healed, and she came back to life. Yes. And at last, it's written that at last many believed the Lord, seeing her testimony. इसकी testimony के द्वारा, मतलब what a blessed testimony, what a blessed life this lady is having. It's recorded like full of good deeds. This woman is full of good deeds and charitable deeds. And many people, they went to Peter and said, please come, and you should know. Yes. No, you have to come, Peter. Peter was in another town and Peter was called. No, Peter, you come. And many people were crying over this woman. Now this woman could have been easily forgotten, but praise God, the people who are helpful, the people who are giving, the people who are serving others, they are always loved by people. Do you know, when you give to God and God's kingdom and God's people, there are many people praying for you. Many people. And I believe that every church needs this kind of people. हर एक कलीसिया में इस तरीके के लोगों की आवश्यकता होती है, जो गरीबों की चिंता कर सकें, जो अपने धन से कलीसिया की चिंता कर सकें, जो अपने पासवान की चिंता कर सकें. Every church needs Dorcas. Every church needs these kind of women who were found in Luke chapter 8, who were serving Jesus with their possession.
Every church needs this kind of people. And I pray that all of the churches will be full with such kind of people, that your heart would be raised up to generosity in such a way that you will fulfill the needs of the church. अगर चर्च में सुसमाचार सेवा के लिए पैसे चाहिए, may you be the first one to talk to your husband and say, husband, हमें इस काम के लिए कुछ ना कुछ करना है. Now you know in the Bible there are many women who did this. इन स्त्रियों के लूका 8 में हम लोग वापस चलेंगे. We will come back to Luke chapter 8 and look at the blessing. क्या आशीष इनकी थी? सबसे पहली आशीष, they were able to serve Jesus and his disciples. आपको क्या ये छोटी बात जान पड़ती है कि आप राजाओं के राजा के सेवा की जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़े करे गए? You think it's a small thing that you are partnering with God's people to do the work of God? What a privilege it is to fulfill the needs of the ministers. परमेश्वर के दासों की जरूरतों को पूरा करना कितनी बड़ी आशीष है ये. इसको छोटा मत समझिए प्लीज. And if you are able to help your pastor in these hours and these times, I am thanking God for your life. I am thanking God for your life कि आपने अपने पास्टर के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर उसकी जरूरतों को पूरा किया है. He also has a family. He also has children. He also has needs, and you're taking care of those needs. You're trying to do whatever best you can. Praise the Lord. You are serving Jesus. आपको क्या लगता है ये औरतें थी यीशु की सेवा किया करती थी, क्या यीशु मसीह को कोई नीड थी? वो 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खाना खिलाता है. वो ऐसे आज्ञा देता है, बटेरें गिरती हैं, मन्ना यूं आसमान से गिराता है. उसको क्या कमी है? What does he need? No, it is the people of God जिनको कमी हो जाती है. और जब आप उनके लिए खड़े होते हैं, you are serving God. क्या आपको मैथ्यू 25 के बारे में मालूम है ना? यीशु मसीह ने कहा, when I was hungry you fed me, when I was naked you clothed me, when I was rejected and dejected and I was in prison you came to visit me. तुमने मेरी बीमारी में सुधि ली. वो कहेंगे, हमने तुझे कब नंगा भूखा या कंगाल देखा? जो कुछ तुमने उनके साथ, छोटे से छोटों के जो मेरा नाम लेते हैं, उनके साथ किया, मेरे साथ किया. You have an opportunity to serve God when you serve the people of God. You have an opportunity to minister to Jesus when you minister to the people of God. And that's why these women understood the power of ministering to people who serve God. चेलों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं. उनकी भूख के समय में, उनकी मुसीबत के समय में ये स्त्रियां काम आ रही हैं और उनके नाम लिखे गए. थिंक अबाउट दिस. उनके नाम लिखे गए. कौन नाम लिखता है बताइए? नाम लिखा गया है यहां पर इन स्त्रियों का. नाम लिखा गया है दोरकास का, नाम लिखा गया है योअन्ना का, सुजैना का, मिरियम का. नाम लिखा गया है उन चीजों में. वाओ, परमेश्वर की आशीष. सब द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इज that you are able to serve Jesus when you serve the people of God. Number 2, another blessing. इसी की 8th chapter के 19th verse से पढ़ना. Read from verse 19. 8th chapter verse 19 onwards. 19, Luke 20, 8, 19, 20 Now, and 21. Do you know that these people were there with Jesus? These women were there with Jesus from one town to another. And then Jesus came to another small town which was close to his town, and then there was a big crowd. Then listen what happened. Then his mother and brothers came to him and could not approach him because of the crowd. And it was told him by some who said, your mother and your brothers are standing outside desiring to see you. कुछ लोग उसके पास आके कहने लगे, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं. याद रखिए, तेरी माता भी है इसमें और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं कि यीशु को बुलाओ, हम मीटिंग में अंदर नहीं जाएंगे. आगे सुनेगा. अंदर कौन था? अंदर स्त्रियां भी थी. कैसे पता चला? पढ़ें. But he answered and said to them, my mother and my brothers are these who hear the word of God and do it. इसका मतलब क्या है मालूम? ये जो मेरी आवाज सुन रही हैं, ये जिन्होंने सब कुछ त्याग करके मेरे साथ रहना गवारा किया है, ये मेरी माता है. Think about this. Such a close relationship that Jesus is making with those people who are there with him and who are serving him. ये blessing, ये उसी चैप्टर की बात है, ये उसी उसकी बात है. One after another Jesus is teaching, और वही भीड़ है, उसी भीड़ में कह रहा है, ये मेरी माता है,
इसका मतलब उनमें से कोई एक जो होगा माता की उम्र का होगा, उसने कहा ये मेरी माता है। कौन स्त्रियां हैं? ये उनमें से हैं स्त्रियां जो यीशु के साथ जगह जगह जा रही हैं और ये यीशु की सेवा कर रही हैं अपने धन के साथ। और यीशु मसीह कह रहा है दे हैव रियली टेकन केयर ऑफ मी। यीशु मसीह मरियम से ये नहीं कह रहा कि तू मेरी माता नहीं है, पर ये कहना मांग रहा है these people are closely knitted with me, they are closely related to me because they see the need of the people, they see that I am and my teachings are more valuable than any other thing. When you understand that the teachings of Jesus are more valuable than spending your time here and there, let me tell you, Jesus says you are one of mine. आप तुम मेरे हो, तुम मेरे में से एक हो। जैसे दोरकास के लिए लिखा हुआ है, she was a woman who was always helpful to others and God blessed her and used her. उसकी गवाही से कितने लोग परमेश्वर के पास आने लगे। And you know, she was not just a poor woman, she used to do business with purple. Now purple in those days means the dress of the rulers. राजाओं और शासकों के कपड़े हुआ करते थे। लिडिया, राइट? यस। और मैं चाहता हूं कि आप इसके 16 चैप्टर, एक्ट्स चैप्टर 16, इस औरत के बारे में, लिडिया के बारे में आपको जल्दी से बताना चाहता हूं। एक्ट्स चैप्टर 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्ट्स चैप्टर 16 verse 14. Yes. Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Tyre. Thyatira. Now she is from the city of Thyatira. Thyatira was where? In Asia Minor, near Turkey. That region, Turkish region. And Jesus is where? In Philippi, in Macedonia. That is European part. Do you know that before this, Paul had a dream that a man is standing and saying, come over and help us. He had seen a man in his dream who's saying, come over and help us. And then Bible says, Paul and his friends concluded that God is calling them to Macedonia. And they went to Macedonian region and went to Philippi. 2-3 days they were there and they went to Philippi. ये मकिदुनिया में गए। एक आदमी दर्शन में दिखाई दिया था, पर यहाँ पर पहली औरत जो प्रभु यीशु पे विश्वास कर रही वो कौन है? औरत है। अरे ये क्या है? ड्रीम में तो आदमी दिखाया था और विश्वास करने में औरत है। God is saying the first European convert is from Turkey and is not from Philippi, but I am going to open her heart to receive my words. What a grace that this woman has. इस औरत के पास एक grace है। क्या reason था? Anu, go ahead and read. Why did she receive this mercy? Number one, because God is a merciful God. God was merciful to her. But there were few things that she also had, great in her. इसके अंदर कुछ अच्छी बात थी. Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city She of... heard Paul. Where? Near the river. Now, why Paul had gone near the river? To pray. Because there was always near the shore or near the seashore, there were always places of prayer for Jewish people. And Paul decided to go there and find somebody, maybe he'll be able to share the gospel with somebody. And he went there. And Bible says the Lord was not opening the heart of any man there, but the Lord was opening the heart of a woman there who was a businesswoman from another town. Wow. God is a merciful God. I pray any Lydia who's listening to me, any businesswoman who's listening to me, if God is opening your heart, I pray you open your heart and receive God's word, and not just God's word. Listen later on what happened. क्या हुआ? Verse 14. She was a seller of purple from the city of Thyatira, who worshipped God. Who worshipped God. She always loved Jewish worship. She was not a Jew, but she loved to worship Jewish God. Yes. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. It does not say that she opened her heart to receive. It was the Lord opening her heart. I just love the way God does things. सारे उसने तौर तरीकों को, यहूदी तौर तरीकों को किनारे करके एक औरत को चुन लिया और उसके हृदय को खोल दिया.
Is God doing that today even? I pray yes. And I believe yes, He's doing. He's opening the hearts of many women even today whose hearts are open and they are going to serve God. Suna आगे क्या लिखा हुआ है? Yes. Who worship God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. And when she and her household were baptized, she was the first convert. Her household was the first converts in the European soil. Lydia, remember that. Go ahead. She begged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay." And so she persuaded us. She persuaded us. अगर तुम मुझे प्रभु के विश्वासनी समझते हो तो मेरे साथ घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो। अरे बपतिस्मा हो गया सब लोगों का, तुम लोग जाओ। ना 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 ना, तुम घर चलो, तुम घर चलो। क्यों? घर चल करके और बातें करेंगे और सुनाना। मुझे ये वचन अच्छा लग रहा है। आपको मालूम इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर इस पे पौलुस पर अगले दिन मुसीबत आई, फिर जेल में डाल दिया गया, फिलिप्पी के जेल में डाल दिया गया और फिलिपियन जेलर का उद्धार हो गया। फिलिपियन जेलर का उद्धार होने के बाद लोगों ने कहा, अरे भैया इसको रिलीज कर दो, इसको रिलीज कर दो। रिलीज कर दिया गया तो कहां गया? वर्स 40 पढ़ें, इसी के 16th वर्स इन वर्स 40। सी व्हाट इट सेज। यस, वर्स 40, यस। So they went out to the prison and entered the house of Lydia. They entered the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they encouraged them and departed. ऐसा नहीं लग रहा कि first church लिडिया के घर पे लगने लगा? That her house became a place of teaching. Paul went to Lydia's house. Why did he not go to jailer's house? Now jailer's house, everything is done now. His household has been saved. Now I'm going back to Lydia. Why Lydia? Because she has gathered some more people and we are going to share the gospel with them. And think about this. It looks like this was the first church house or house church in that place. Many Lydias are opening their houses. Many Lydias are opening their hearts, and God is opening their hearts. And many Lydias are opening their everything so that people can grow in Jesus Christ. I pray when you're listening to us that you are that Lydia. That you will open up your house for Paul so that others can be blessed and you will gather them and others can be blessed. Do you know there was a woman called Lazarus' sisters, मेरी एंड मार्था, मरियम और मार्था, ये यीशु को अपने घर में उतारते थे और भीड़ जमा हो जाती थी और सुसमाचार सुनाया जाता था। I pray that you are that house. I pray you are Lydia in Jesus' mighty name, who the Lord opens her heart and you open your house for others to come in and you start a new church in your house. आपके घर में एक नई चर्च की स्थापना हो जाए, कितना अच्छा होगा। Will you open up yourself? Will you open your possession? Will you open your sustenance? Will you open substance to share with others so that God's name may be glorified? मेरी प्रार्थना है ऐसी लिडियाओं की, ऐसी दोरकास की और ऐसी स्त्रियों की, योआना, सुजैना और मरियम जैसी स्त्रियों की पूरी कलीसियाओं को जरूरत है जो अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी चीजों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करें। She was a seller of purple. राजसी कपड़े बना करके बेचा करती थी and she is being chosen by God. God is doing something wonderful. आज भी कर रहा है, क्या जाने उसने आपको चुना है। If you are that Lydia, be glad to be that Lydia. Maybe you're not that great leader. Paul ने ये नहीं कहा कि Lydia आज के बाद तू यहाँ की apostle बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। But Lydia का घर खुल गया परमेश्वर की सेवा के लिए और वहाँ पर परमेश्वर की सेवा होने लगी। May you be used and may your house and your substance and may everything you have be used for God's glory. खुदा बाप आपको बहुत आयत से बरकत दे। Let's pray. Anu, can you lead us in prayer? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful word that you have given us on our hearts, Lord. Yes, Lord. And we are blessed by this word. And many people who have heard this word and who will hear this word on this online page. Amen. May they be blessed and their Yes, heart Lord. be turned towards Yes, you. Lord. Yes, Lord. And their hearts be open. Yes, Lord. And let their hearts be generous Yes, in Lord. giving for the work of your kingdom, Lord. I pray for everyone who is present on this page
Let your Spirit take hold of their hearts, Lord, and open their hearts so that they may open themselves and their substances and everything to provide for the expansion of your kingdom. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you, friends, for joining our last episode of Sheroes of Faith. We will come back again next week with another, and you will be intimated for that. Thank you for joining us. God bless you. Thank you.